1 ईयर बाइबल रीडिंग प्लान, 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान, नंबर्स 11 चैप्टर, 12 चैप्टर, 13 चैप्टर। गिनती की पुस्तक 11 अध्याय, 12 अध्याय, 13 अध्याय हम पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्जन में से और हिंदी में PSI बाइबल में से। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं खुदा परमेश्वर, हमें सच्चाई का सामना कराने की हम आपसे विनती करते हैं ताकि झूठ और धोखा टूट जाए और हमारा जीवन सच्चाई के ऊपर खड़ा रहे। हम विनती करते हैं सच्चाई से हमारा सामना करो। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन आमीन। Manna Lord, 70 elders appointed, quails are given in wrath, etc. And when the people complained, it displeased the Lord, and the Lord heard it, and his anger was kindled, and the fire of the Lord burned among them and consumed them that were in the uttermost parts of the camp. And the people cried unto Moses, and when Moses prayed unto the Lord, the fire was quenched. And he called the name of the place Taberah, because the fire of the Lord burned among them, and the mixed multitude that was among them fell a lusting. And the children of Israel also wept again, and said, Who shall give us flesh to eat? We remember the fish which we did eat in Egypt freely, the cucumbers and the melons and the leeks and the onions and the garlic. But now our soul is dried away. There is nothing at all beside this manna before our eyes. And the manna was as coriander seed, and the color thereof as the color of bdellium. And the people went about and gathered it, and ground it in mills, or beat it in a mortar, and baked it in pans, and made cakes of it, and the taste of it was as the taste of fresh oil. And when the dew fell upon the camp in the night, the manna fell upon it. Then Moses heard the people weep throughout their families, every man in the door of his tent, and the anger of the Lord was kindled greatly. Moses also was displeased, and Moses said unto the Lord, Wherefore hast thou afflicted thy servant? And wherefore have I not found favor in thy sight, that thou layest the burden of all these people upon me? Have I conceived all these people? Have I begotten them, that thou shouldest say unto me, Carry them in thy bosom, as a nursing father beareth the sucking child, unto the land which thou swarest unto their fathers? Whence should I have flesh to give unto all these people? For they weep unto me, saying, Give us flesh, that we may eat. I am not able to bear all these people alone, because it is too heavy for me. And if thou deal thus with me, kill me, I pray thee, out of hand, if I have found favor in thy sight, and let me not see my wretchedness. And the Lord said unto Moses, Gather unto me 70 men of the elders of Israel, whom thou knowest to be the elders of the people, and officers over them, and bring them unto the tabernacle of the congregation, that they may stand there with thee. And I will come down and talk with thee there. And I will take of the Spirit which is upon thee, and will put it upon them, and they shall bear the burden of the people with thee, that thou bear it not thyself alone. And say thou unto the people, Sanctify yourselves against tomorrow, and ye shall eat flesh, for ye have wept
in the ears of the Lord, saying, Who shall give us flesh to eat? For it was well with us in Egypt. Therefore the Lord will give you flesh, and ye shall eat. Ye shall not eat 1 day, nor 2 days, nor 5 days, neither 10 days, nor 20 days, but even a whole month, until it come out at your nostrils, and it be loathsome unto you, because that I have despised the Lord which is among you, and have wept before him, saying, Why came we forth out of Egypt? And Moses said, The people among whom I am are 600,000 footmen, and thou hast said, I will give them flesh, that they may eat a whole month. Shall the flocks and the herds be slain for them, to suffer them? Or shall all the fish of the sea be gathered together for them, to suffice them? And the Lord said unto Moses, Is the Lord's hand waxed short? Thou shalt see now whether my word shall come to pass unto thee or not. And Moses went out and told the people the words of the Lord, and gathered the 70 men of the elders of the people, and set them round about the tabernacle. And the Lord came down in a cloud, and spake unto him, and took off the spirit that was upon him, and gave it unto the 70 elders. And it came to pass that when the Spirit rested upon them, they prophesied and did not cease. But there remained 2 of the men in the camp. The name of the one was Eldad, and the name of the other Medad. And the Spirit rested upon them, and they were of them that were written, but went not out unto the tabernacle, and they prophesied in the camp. And there ran a young man, and told Moses, and said, Eldad and Medad do prophesy in the camp. And Joshua the son of Nun, the servant of Moses, one of his young men, answered and said, My lord Moses forbid them. And Moses said unto him, Enviest thou for my sake? Would God that all the Lord's people were prophets, and that the Lord would put his spirit upon them. And Moses gat him into the camp, he and the elders of Israel. And there went forth a wind from the Lord, and brought quails from the sea, and let them fall by the camp, as it were a day's journey on this safe and on this side, and as it were a day's journey on the other side, round about the camp, as it were 2 cubits high upon the face of the earth. And the people stood up all that day and all that night, and all the next day, and they gathered the quails. He that gathered least gathered 10 homers, 10 homers, and they spread them all abroad for themselves round about the camp. And while the flesh was yet between their teeth, ere it was chewed, the wrath of the Lord was kindled against the people, and the Lord smote the people with a very great plague. And he called the name of that place Kibroth Hattava, because there they buried the people that had lusted. And the people journeyed from Kibroth Hattava unto Hazeroth, and abode at Hazeroth. Chapter 12. Miriam's and Aaron's sedition, her leprosy. Moses prayeth for her. She is shut out of the camp 7 days. First verse. And Miriam and Aaron spake against Moses because of the Ethiopian woman whom he had married, for he had married an Ethiopian woman. And they said, Hath the Lord indeed spoken only by Moses? Hath he not spoken
also by us? And the Lord heard it. Now the man Moses was very meek above all the men which were upon the face of the earth. And the Lord spake suddenly unto Moses and unto Aaron and unto Miriam, Come out, ye three, unto the tabernacle of the congregation. And they three came out. And the Lord came down in the pillar of the cloud, and stood in the door of the tabernacle, and called Aaron and Miriam. And they both came forth. And he said, Hear now my words. If there be a prophet among you, if the Lord will make myself known unto him in a vision, and will speak unto him in a dream, my servant Moses is not so, who is faithful in all mine house. With him will I speak mouth to mouth, even apparently, and not in dark speeches, and the similitude of the Lord shall he behold. Wherefore then were ye not afraid to speak against my servant Moses? And the anger of the Lord was kindled against them, and he departed. And the cloud departed from off the tabernacle, and behold, Miriam became leprous, while as snow. And Aaron looked upon Miriam, and behold, she was leprous. And Aaron said unto Moses, Alas, my Lord, I beseech thee, lay not the sin upon us wherein we have done foolishly, and wherein we have sinned. Let her not he be as one dead, of whom the flesh is half consumed, when he cometh out of his mother's womb. And Moses cried unto the Lord, saying, Hear her now, O God, I beseech thee. And the Lord said unto Moses, If her father had but spit in her face, should she not be ashamed 7 days? Let her be shut out from the camp 7 days, and after that let her be received in again. And Miriam was shut out from the camp 7 days, and the people journeyed not till Miriam was brought in again. And afterward the people removed from Hazeroth, and pitched in the wilderness of Paran. Chapter 13. Chapter 13. The names of the men who were sent to search the land, their instructions, their acts, and their relation. And the Lord spake unto Moses, saying, Send thou men, that they may search the land of Canaan, which I give unto the children of Israel. Of every tribe of their fathers shall ye send a man, every one a ruler among them. And Moses, by the commandment of the Lord, sent them from the wilderness of Paran. All those men were heads of the children of Israel, and these were their names of the tribe: and Reuben, Shammua the son of Zakur, of the tribe of Simeon; Shaphat the son of Hori, of the tribe of Judah; Caleb the son of Jephunneh, of the tribe of Issachar; Igal the son of Joseph, of the tribe of Ephraim; Oshea the son of Nun, of the tribe of Benjamin; Palti the son of Raphu, of the tribe of Zebulun; Gadiel the son of Sodi, of the tribe of Joseph, namely of the tribe of Manasseh; Gadi the son of Susi, of the tribe of Dan; Amiel the son of Gemali, of the tribe of Asher; Ashur; Sethur the son of Michael, of the tribe of Naphtali; Nahbi the son of Avopsi, of the tribe of Gad; Geuel the son of Machi,
These are the names of the men which Moses sent to spy out the land. And Moses called Oshea the son of Nun, Jehoshua, and Moses sent them to say out the land of Canaan, and out the land of Canaan, and said unto them, Get you up this way southward, and go up into the mountain, and see the land what it is, and the people that dwell therein, whether they be strong or weak, few or many, and what the land is that they dwell in, whether it be good or bad, and what cities they be that they dwell in, whether in tents or in strongholds, and what the land is, whether it be fat or lean, whether there be wood therein or not, and be ye of good courage, and bring off the fruit of the land. Now the time was the time of the first stripe grapes. So they went up and searched the land from the wilderness of Zin unto Rehob, as men come to Hamath, and they ascended by the south and came unto Hebron, where Ahiman, Sheshai, and Talmai, the children of Anak, were. Now Hebron was built 7 years before Zoan in Egypt, and they came in unto the brook of Eshcol, and cut down from thence a branch with one cluster of grapes, and they bare it between two upon a staff, and they brought of the pomegranates and of the figs. The place was called the brook Eshcol, because of the cluster of grapes which the children of Israel cut down from thence. And they returned from searching of the land after 40 days. And they went and came to Moses and to Aaron and to all the congregation of the children of Israel unto the wilderness of Paran, to Kadesh, and brought back word unto them and unto all the congregation, and shewed them the fruit of the land. And they told him and said, We came unto the land whither thou sentest us, and surely it flow with milk and honey, and this is the fruit of it. Nevertheless, the people be strong that dwell in the land, and the cities are walled and very great. And moreover, we saw the children of Anak there. The Amalekites dwell in the land of the south, and the Hittites and the Jebusites and the Amorites dwell in the mountains, and the Canaanites dwell by the sea and by the coast of Jordan. And Caleb stilled the people before Moses and said, Let us go up at once and possess it, for we are well able to overcome it. But the men that went up with him said, We be not able to go up against the people, for they are stronger than we. And they brought up an evil report of the land which they had searched among the children of Israel, saying, The land through which we have gone to search it is a land that eateth up the inhabitants thereof, and all the people that we saw in it are men of a great stature. And there we saw the giants, the sons of Anak, which come of the giants, and we were in our own sight as grasshoppers, and so we were in their sight. थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा, हम आपसे विनती करते हैं इन वचनों में हमें फिट एंड फिक्स कीजिए, ईश्वरीय रचना डिवाइन ऑर्डरलीनेस में लेकर आइए। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन आमीन। 2 years बाइबल रीडिंग प्लान, 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। Acts 23 chapter 22 verse से 35 verse, Psalms 55 chapter। प्रेरितों के काम 23 अध्याय 22 वचन से 35 वचन तक, और भजन संहिता
55 अध्याय हम अकेले में, व्यक्तिगत समय में, पर्सनल टाइम में इसे पढ़ेंगे, क्योंकि ये वचन के आधार से परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर से हमको सुधार ला कर देगा, हमारे रास्ते बदलने के लिए हमसे वो बातें करेगा और जिस रास्ते से हमको जाना है वो स्पष्ट तरीके से हमको बता सकेगा। हमने ये फैसला किया व्यक्तिगत समय, पर्सनल टाइम में इसे पढ़ने का। ज़रूरी नहीं आप सभी ने ऐसे ही करना है, जैसा परमेश्वर का आत्मा आपको अगुवाई करे वैसे आप इसे पढ़ सकते हैं। निश्चित इतना ही है कि परमेश्वर का आत्मा हमको सिखाना चाहिए, परमेश्वर के आत्मा का हमने लाभ उठाना है। प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन। पवित्र आत्मा हमें इन वचनों में फिट एंड फिक्स कीजिए, हमें सच्चाई का सामना कराइए पवित्र आत्मा, ताकि झूठ हमारे अंदर से खत्म हो और सच्चाई हम में राज्य करे। नासरी यीशु के नाम में हमें फिट एंड फिक्स कीजिए, ईश्वरीय रचना डिवाइन ऑर्डरलीनेस पे लेकर आइए। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन। गिनती की पुस्तक 11 अध्याय, 12 अध्याय, 13 अध्याय हम पढ़ेंगे किंग BSI बाइबल में से। इसराइलियों का कुड़कुड़ाना और इसका दंड भोगना, पहले वचन से। फिर वे लोग बुड़बुड़ाने और यहोवा के सुनते बुरा कहने लगे। अतः यहोवा ने सुना और उसका कोप भड़क उठा और यहोवा की आग उनके मध्य में जल उठी और छावनी के एक किनारे से भस्म करने लगी। तब लोग मूसा के पास आकर चिल्लाए और मूसा ने यहोवा से प्रार्थना की। तब वह आग बुझ गई और उस स्थान का नाम तबेरा पड़ा, क्योंकि यहोवा की आग उनमें जल उठी थी। मूसा द्वारा 70 अगुवों का चुनाव, 4 वचन से आगे। फिर जो मिली जुली भीड़ उनके साथ थी वह कामुकता करने लगी और इसराइली भी फिर रोने और कहने लगे, हमें मांस खाने को कौन देगा? हमें वे मछलियाँ स्मरण है जो हम मिस्र में सेंत मेंत खाया करते थे, और वे खीरे और खरबूजे और गंदने और प्याज और लहसुन भी। परंतु अब हमारा जी घबरा गया है, यहाँ पर इस मन्ना को छोड़ और कुछ भी देख नहीं पड़ता। मन्ना तो धनिये के समान था और उसका रंग रूप मोती का सा था। लोग इधर उधर जाकर उसे बटोरते और चक्की में पीसते या ओखली में कूटते थे, फिर तसले में पकाते और उसके फुलके बनाते थे, और उसका स्वाद तेल में बने हुए पोए के समान था। और रात को जब छावनी में ओस पड़ती थी तब उसके साथ मन्ना भी गिरता था। और मूसा ने सब घरानों के आदमियों को अपने अपने डेरे के द्वार पर रोते सुना, और यहोवा का कोप अत्यंत भड़का और मूसा को भी बुरा मालूम हुआ। तब मूसा ने यहोवा से कहा, तू अपने दास से यह बुरा व्यवहार क्यों करता है? और क्या कारण है कि मैंने तेरी दृष्टि में अनुग्रह नहीं पाया कि तूने इन सब लोगों का भार मुझ पर डाला है? क्या ये सब लोग मेरी ही कोख में पड़े थे? क्या मैं ही ने इनको उत्पन्न किया? जो तू मुझसे कहता है कि जैसे पिता दूध पीते बालक की अपनी गोद में उठाए उठाए फिरता है, वैसे ही मैं इन लोगों को अपनी गोद में उठाकर उस देश में ले जाऊं जिसके देने की शपथ तूने पूर्वजों से खाई है। मुझे इतना मांस कहाँ से मिले कि इन सब लोगों को दूं? ये कह कह कर मेरे पास रो रहे हैं कि तू हमें मांस खाने को दे। मैं अकेला इन सब लोगों का भार नहीं संभाल सकता, क्योंकि यह मेरी शक्ति के बाहर है। और जो तुझे मेरे साथ यही व्यवहार करना है तो मुझ पर तेरा इतना अनुग्रह हो कि तू मेरे प्राण एकदम ले ले, जिससे मैं अपनी दुर्दशा न देखने पाऊँ। यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएली पुरनियों में से 70 ऐसे पुरुष मेरे पास इकट्ठा कर, जिनको तू जानता है कि वे प्रजा के पुरनिये और उनके सरदार हैं, और मिलाप वाले तंबू के पास ले आ कि वे तेरे साथ वहाँ खड़े हो। तब मैं उतरकर तुझसे वहाँ बातें करूँगा, और जो आत्मा तुझ में है उसमें से कुछ लेकर उनमें समवाऊंगा, और वे इन लोगों का भार तेरे संग उठाए रहेंगे, और तुझे उसको अकेले अकेले उठाना न पड़ेगा। और लोगों से कहे, कल के लिए अपने को पवित्र करो, तब तुम्हें मांस खाने को मिलेगा, क्योंकि तुम यहोवा के सुनते हुए यह कह कह कर रोए हो कि हमें मांस खाने को कौन देगा? हम मिस्र ही में भले थे,
इसलिए यहोवा तुमको मांस खाने को देगा और तुम खाना, फिर तुम 1 दिन या 2 या 5 या 10 या 20 दिन ही नहीं परंतु महीने भर उसे खाते रहोगे, जब तक वह तुम्हारे नथनों से निकलने न लगे और तुमको उससे घृणा न हो जाए, क्योंकि तुम लोगों ने यहोवा को जो तुम्हारे मध्य में है तुच्छ जाना है और उसके सामने यह कहकर रोए हो कि हम मिस्र से क्यों निकल आए। फिर मूसा ने कहा, जिन लोगों के बीच मैं हूँ उनमें से 6 लाख तो प्यादे ही हैं, और तूने कहा है कि मैं उन्हें इतना मांस दूंगा कि वे महीने भर उसे खाते ही रहेंगे। क्या वे सब भेड़ बकरी गाय बैल उनके लिए मारे जाए कि उनको मांस मिले, या क्या समुद्र की सब मछलियाँ उनके लिए इकट्ठी की जाए कि उनको मांस मिले। यहोवा ने मूसा से कहा, क्या यहोवा का हाथ छोटा हो गया है? अब तो देखेगा कि मेरा वचन जो मैंने तुझसे कहा है वह पूरा होता है कि नहीं। तब मूसा ने बाहर जाकर प्रजा के लोगों को यहोवा की बातें कह सुनाई और उनके पुरनियों में से 70 पुरुष इकट्ठा करके तंबू के चारों ओर खड़े किए। तब यहोवा बादल में होकर उतरा और उसने मूसा से बातें की, और जो आत्मा उसमें था उसमें से लेकर उन 70 पुरनियों में समवा दिया। और जब वह आत्मा उनमें आया तब वे नबुवत करने लगे, परंतु फिर और कभी न की। परंतु 2 मनुष्य छावनी में रह गए थे, जिनमें से एक का नाम इल्दाद और दूसरे का मेदाद था। उनमें भी आत्मा आया, ये भी उन्हीं में से थे जिनके नाम लिख लिए गए थे, पर तंबू के पास न गए थे, और वे छावनी ही में नबुवत करने लगे। तब किसी जवान ने दौड़कर मूसा को बुलाया, बतलाया कि एल्दाद और मेदाद छावनी में नबुवत कर रहे हैं। तब नून का पुत्र यहोशू, जो मूसा का सेवक और उसके चुने हुए वीरों में से था, और उसने मूसा से कहा, हे मेरे स्वामी मूसा, उनको रोक दे। मूसा ने उससे कहा, क्या तू मेरे कारण जलता है? भला होता कि यहोवा की सारी प्रजा के लोग नबी होते और यहोवा अपनी आत्मा उन सबों में समवा देता। तब फिर मूसा इसराइल के पुरनियों समेत छावनी में चला गया यहोवा की ओर से बटेरे। तब यहोवा की ओर से एक बड़ी आंधी आई और वह समुद्र से बटेरे उड़ा के छावनी पर और उसके चारों ओर इतनी ले आई कि वे इधर उधर 1 दिन के मार्ग तक भूमि पर 2 हाथ के लगभग ऊंचे तक छा गए। और लोग उठकर उस दिन भर और रात भर और दूसरे दिन भी दिन भर बटेरों को बटोरते रहे। जिसने कम से कम बटोरा उसने 10 होमेर बटोरा, और उन्होंने उन्हें छावनी के चारों ओर फैला दिया। मांस उनके मुंह ही में था और वे उसे खाने न पाए थे कि यहोवा का कोप उन पर भड़क उठा, और उसने उनको बहुत बड़ी मार से मारा, और उस स्थान का नाम किब्रोत तावा पड़ा, क्योंकि जिन लोगों ने कामुकता की थी उनको वहाँ मिट्टी दी गई। फिर इसराइली किब्रोत तावा से प्रस्थान करके हसेरोत में पहुँचे और वहीं रहे। मूसा की श्रेष्ठता का प्रमाण 12 अध्याय पहले वचन से। मूसा ने एक कुशी स्त्री के साथ विवाह कर लिया था, इसलिए मरियम और हारून उसकी उस विवाहित कुशी स्त्री के कारण उसकी निंदा करने लगी। उन्होंने कहा, क्या यहोवा ने केवल मूसा ही के साथ बातें की है? क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की? उनकी यह बात यहोवा ने सुनी। मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था, इसलिए यहोवा ने एकाएक मूसा और हारून और मरियम से कहा, तुम तीनों मिलाप वाले तंबू के पास निकल आओ। तब वे तीनों निकल आए। तब यहोवा ने बादल के खंभे में उतरकर तंबू के द्वार पर खड़ा होकर हारून और मरियम को बुलाया, अतः वे दोनों उसके पास निकल आए। तब यहोवा ने कहा, मेरी बातें सुनो, यदि तुम में कोई नबी हो तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूँगा या स्वप्न में उससे बातें करूँगा। परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है, वह तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है। उससे मैं गुप्त रीति से नहीं परंतु आमने सामने और प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूँ, और वह यहोवा का स्वरूप निहारने पाता है। इसलिए तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए क्यों नहीं डरे? तब यहोवा का कोप उन पर भड़का और वह चला गया।
तब वह बादल तंबू के ऊपर से उठ गया और मरियम कोढ़ से हिम के समान श्वेत हो गई। और हारून ने मरियम की ओर दृष्टि की और देखा कि वह कोढ़ीन हो गई है। तब हारून मूसा से कहने लगा, हे मेरे प्रभु, हम दोनों ने जो मूर्खता की वरन पाप भी किया, यह पाप हम पर न लगने दे और मरियम को उस मरे हुए के समान न रहने दे जिसकी देह अपनी माँ के पेट से निकलते ही अधगली हो। अतः मूसा ने यह कहकर यहोवा की दोहाई दी, हे ईश्वर, कृपा और उसको चंगा कर। यहोवा ने मूसा से कहा, यदि उसका पिता उसके मुंह पर थूका ही होता तो क्या 7 दिन तक वह लज्जित न रहती? इसलिए वह 7 दिन तक छावनी से बाहर बंद रहे, उसके बाद वह फिर भीतर आने पाए। अतः मरियम 7 दिन तक छावनी से बाहर बंद रही, और जब तक मरियम फिर आने न पाई तब तक लोगों ने प्रस्थान न किया। उसके बाद उन्होंने हसेरोत से प्रस्थान करके पारान नामक जंगल में अपने डेरे खड़े किए। कनान देश में भेदिए। 13 अध्याय पहले वचन से। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, कनान देश जिसे मैं इस्राएलियों को देता हूँ उसका भेद लेने के लिए पुरुषों को भेज। वे उनके पितरों के प्रति गोत्र के एक एक प्रधान पुरुष हो। यहोवा से यह आज्ञा पाकर मूसा ने ऐसे पुरुषों को परान जंगल से भेज दिया जो सब के सब इस्राएलियों के प्रधान थे। उनके नाम ये हैं, रूबेन के गोत्र में से जक्कोर का पुत्र शम्मो, शिमोन के गोत्र में से होरी का पुत्र शापात, यहूदा के गोत्र में से यापुन्ने का पुत्र कलेब, इसक्कार के गोत्र में से योसेफ का पुत्र यगाल, एप्रैम के गोत्र में से नून का पुत्र होशे, बिन्यामीन के गोत्र में से रापू का पुत्र पलती, जबूलून के गोत्र में से सोदी का पुत्र गदीएल, यूसुफ वंशियों में मनश्शे के गोत्र में से सूसी का पुत्र गद्दी, दान के गोत्र में से गमल्ली का पुत्र अमीयल, आशेर के गोत्र में से मिकायल का पुत्र सतूर, नप्ताली के गोत्र में से बोप्से का पुत्र नहूबी, गाद के गोत्र में से माकी का पुत्र गोयल। जिन पुरुषों को मूसा ने देश को के भेद लेने के लिए भेजा था उनके नाम ये ही है। और नून के पुत्र होशे का नाम उसने यहोशू रखा। उनको कनान देश का भेद लेने को भेजते समय मूसा ने कहा, इधर से अर्थात दक्षिण देश होकर जाओ और पहाड़ी देश में जाकर उस देश को देख लो कि कैसा है, और उसमें बसे हुए लोगों को भी देखो कि वे बलवान है व निर्बल, थोड़े हैं या बहुत, और जिस देश में वे बसे हुए हैं वह कैसा है, अच्छा या बुरा, और वे कैसी कैसी बस्तियों में बसे हुए हैं, और तंबुओं में रहते हैं या गढ़ अथवा किलों में रहते हैं, और वह देश कैसा है, उपजाऊ है या बंजर है, और उसमें वृक्ष है या नहीं, और तुम हियाव बांधे चलो और उस देश की उपज में से कुछ लेते भी आना। वह समय पहली पक्की दाखों की का था, इसलिए वे चल दिए और सीन नामक जंगल से ले रहोब तक जो हमात के मार्ग में है सारे देश को देखभाल कर कर उसका भेद लिया। वे दक्षिण देश होकर चले और हेब्रोन तक गए। वहाँ अहीमन, शेशई और तलमई नामक अनाक वंशी रहते थे। हेब्रोन मिस्र के सोवन से 7 वर्ष पहले बसाया गया था। तब वे एशकोल नामक नाले तक गए और वहां से एक डाली दाखों के गुच्छे समेत तोड़ ली, और 2 मनुष्य उसे एक लाठी पर लटकाए हुए उठा ले चले गए, और वे अनारों और जंजीरों में से भी कुछ कुछ ले आए, और इसराइली वहां से दाखों का गुच्छा तोड़ ले आए थे। इस कारण उस स्थान का नाम एशकोल नाला रखा गया। 40 दिन के बाद वे उस देश का भेद लेकर लौट आए और पारान जंगल के कादेश नामक स्थान में मूसा और हारून और इस्राएलियों की सारी मंडली के पास पहुँचे, और उनको और सारी मंडली को संदेश दिया और उस देश के फल उनको दिखाए। उन्होंने मूसा से यह कहकर वर्णन किया, जिस देश में तूने हमको भेजा था उसमें हम गए।
उसमें सचमुच दूध और मधु की धाराएं बहती है और उसकी उपज में से यही है। परंतु उस देश के निवासी बलवान है और उसके नगर गढ़वाले हैं और बहुत बड़े हैं। और फिर हमने वहाँ अनाकवंशियों को भी देखा। दक्षिण देश में अमालेकी बसे हुए हैं और पहाड़ी देश में हित्ती, यबूसी और एमोरी रहते हैं और समुद्र के किनारे किनारे और यरदन नदी के तट पर कनानी बसे हुए हैं। पर कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने के विचार से कहा, हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर ले, क्योंकि निस्संदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है। पर जो पुरुष उसके संग गए थे उन्होंने कहा, उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हम में नहीं है, क्योंकि वे हमसे बलवान हैं। और उन्होंने इस्राएलियों के सामने उस देश की जिसका भेद उन्होंने लिया था यह कहकर निंदा भी की, वह देश जिसका भेद लेने को हम गए थे ऐसा है जो अपने निवासियों को निगल जाता है। और जितने पुरुष हमने उसमें देखे वे सब के सब बड़े डील डॉल के हैं। फिर हमने वहाँ नपीलों को अर्थात नपीली जाति वाले अनाकवंशियों को देखा और हम अपनी दृष्टि में उनके सामने टिड्डे के समान दिखाई पड़ते थे और ऐसे ही उनकी दृष्टि में मालूम पड़ते थे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस। इन वचनों में हमें फिट एंड फिक्स कीजिए, ईश्वरीय रचना डिवाइन ऑर्डरलीनेस पे लेकर आइए। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन।